सो हे गाइस वेलकम बैक टू गाइस। फिर से विराट कोहली की ड्राइंग करने वाला हूँ, बट इस बार आईपीएल ट्रॉफी के साथ। सो सभी आरसीबी फैंस को और विराट कोहली फैंस को कांग्रेचुलेशंस। तो डिफरेंस फोटो में ये वाला यूज कर रहा हूँ और ये वाला फोटो देखो उतना भी क्लियर नहीं है जितना हमें ड्राइंग करने के लिए चाहिए। दैट्स वाई इसमें पहले रिमिनी यूज करने को सोचा था, बट बाद में एआई की मदद से इस फोटो को थोड़ा सा आर्टिस्टिक लुक दिया ताकि कलरिंग की टाइम दिक्कत ना आए। और अभी देखो फेस थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट चलेगा भाई, मुझे एकदम एक्यूरेट फेस क्रिएट करना भी नहीं है। और लास्ट में अभी इसमें थोड़ा सा अपना टच भी दिया हूँ, लाइक बैकग्राउंड में देखो 18 और RCB वगैरह में लिखा हूँ। एंड देन फाइनल लुक कुछ ऐसा लग रहा है। तो अभी इस ड्राइंग को करने के लिए यहाँ पर मैं A3 साइज की ड्राइंग पेज यूज कर रहा हूँ और ग्रीन मेथड का यूज करने वाला हूँ। तो अभी देखो डिफरेंस फोटो के ऊपर ऑलरेडी मैं ग्रीन लाइन्स को क्रिएट कर चुका हूँ। तो ये वाला डिफरेंस फोटो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और जिसको भी जानना है कि किस तरीके से ग्रीन लाइन्स को डिफरेंस फोटो के ऊपर क्रिएट करना है, आप लोग ये वाला विराट कोहली की ड्राइंग ट्यूटोरियल देख लेना, आप लोग समझ जाओगे। ओके, नेक्स्ट अभी हमें ड्राइंग पेज के ऊपर भी सेम ग्रिड लाइंस को क्रिएट करना है। तो वो करने के लिए ड्राइंग पेज की चारों तरफ हमें 3 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क करना है, लाइक 3, 6, 9, 12 ऐसे करके ऊपर और नीचे की तरफ 27 सेमी तक मार्क करना है। और बाकी दोनों साइड्स में 3 सेमी छोड़ छोड़ के 39 सेमी तक मार्क करना है। और अभी इन सब मार्क्स को ऊपर और नीचे और साइड बाय साइड स्ट्रेट लाइंस में मैच करते जाना है। किस तरीके से मैं कर रहा हूं आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग समझ जाओगे। और हाँ, लाइंस को ड्रॉ करने के टाइम कम से कम ग्रेड की पेंसिल यूज करना, लाइक मैं यहाँ पर HB ग्रेड की पेंसिल यूज कर रहा हूँ। और जितना हो सके लो प्रेशर अप्लाई करके लाइंस को ड्रॉ करना, क्योंकि बाद में इन सब लाइंस को इरेज भी करना पड़ता है आउटलाइन ड्रॉ हो जाने के बाद, तो ईजिली इरेज हो जाए उस तरीके से आप लोगों को लाइंस को ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट अभी रिफरेंस फोटो के ऊपर की साइड में देखो और लेफ्ट साइड में देखो नंबरिंग क्या हुआ है। तो सेम ऐसा ही हमें ड्राइंग पेज के ऊपर भी कर लेना है। तो ये आप लोग रिफरेंस फोटो को डाउनलोड करके उसको देखकर कर लेना। ओके, नेक्स्ट अभी हमें ड्राइंग को स्टार्ट करना है। तो फेस की लेफ्ट आई से मैं इस ड्राइंग को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो वो आई किस बॉक्स में है वो फाइंड करना है। तो देखो ऊपर से 5th नंबर बॉक्स पड़े और साइड से 4th नंबर बॉक्स पड़े। तो सेम अभी ड्राइंग पेज में भी ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे से यानी साइड से 2, 3, 4। सो यहाँ से हमें ड्राइंग को स्टार्ट करना है। तो अभी हमें इसी तरीके से जिस बॉक्स में जो भी फीचर्स है जिस तरीके से है वो हमें एक एक करके ड्रॉ करते जाना है। बाकी आप लोग अभी ध्यान से देखो मैं कहाँ पर किस तरीके से कर रहा हूँ, और आप लोग भी करने की ट्राई करो। एंजॉय द वीडियो।
the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart. ओके एक बार इस तरीके से ड्राइंग कंप्लीट हो जाने के बाद थोड़ा सा हमें रेस्ट लेना है, देन ड्राइंग को अच्छी तरीके से देखना है और जहाँ पर भी गलती हुआ है वो सब अभी हमें धीरे धीरे ठीक करना है. Till we grow old, please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what. तो बस गाइस आउटलाइन ड्राइंग कंप्लीट हो चुके हैं और ये ड्राइंग की फोटो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. बाकी आप लोग नीचे कमेंट पर बताओ कि ये ड्राइंग में कौन सी मीडियम पर बनाऊं. मिलते जल्दी इस ड्राइंग की कलरिंग पार्ट में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय. I just wanna love